Hello, good morning, student. In this module name is specification, and we have discussed about in this video session pointing. Okay, so first of all, I give my introduction myself, Darshan Verma, and this subject name is professional practice and valuation, semester 7 in GTU branch. Okay, so now this video session we will discuss about specification, and in specification we discuss about pointing. Okay, so now this point is pointing. In pointing, different types of different topics we have to covered in this topic pointing. First point is preparation of surface. Second point is mortar. Third point is pointing. Fourth point is plus pointing. Fifth point is rule pointing, and last one is measurement. Okay, so now in discuss in details. First point is preparation of surface. Okay, so in preparation of surface, the different types of joints in a brickwork shall be raked out to a depth of at least 12 mm, and the surface of wall including raked joints shall be brushed, cleaned and washed with water and kept wet for 2 days before pointing. If we talk about pointing, the first preparation in the pointing is at least depth at least 12 mm. So पहले पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सरफेस की बात की जाए तो पहले हम जो ब्रिक वर्क होगा तो उसमें हम 12 mm का डेप्थ है वो वहाँ पे क्रिएट करेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 mm डेप्थ वी हैव टू वर्क ऑन joints and will be applied rake joints, and which way? So first of all we have to in rake joints brushed, clean and washed with water and kept wet for 2 days before pointing process. So preparation of surface, these types of activities are created in the preparation of surface. Now second point is mortar. So in pointing, second point is mortar. Which way mortar is used in the pointing? So the materials of mortar, cement and shell will be used in the as per standard specification. So which types of material are used for the pointing? Okay, so in mortar, cement and sand shall be used standard as per standard specifications, and the cement and sand shall be first dry mixed by measuring with boxes to have the required proportion as specified, and proportion may be taken as 1:2 or 1:3, and then mixed by adding water slowly and gradually and thoroughly mixed. So in discuss about mortar, so which types of material are used in the mortar? So in materials if we have taken as a material mortar, cement and sand, standard specifications for the mortar. एंड जो सीमेंट और सैंड की बात की जाए तो पहले हमको ड्राई मिक्स करेंगे, और जो उसमें जो मेजरिंग बॉक्स आता है उस पर पहले हम कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जो उसका रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होगा एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन सीमेंट मोर्टार, यानी कि जो सीमेंट है उसका प्रोपोर्शन 1 रखेंगे और सैंड का प्रोपोर्शन वो 2 रखेंगे, और सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 और सैंड का प्रोपोर्शन 3 रखेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोपोर्शन में वी हैव टू टेकन मिक्स्ड बाय और स्लोली एडिंग वाटर आफ्टर ग्रेजुअली एंड थ्रूली मिक्स. जो मोटर है वो मैंने ये बात की, तो इस तरीके से मोटर है वो पॉइंटिंग में बनाया जाता है. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज पॉइंटिंग. सो इन पॉइंटिंग वी डिस्कस इन डिटेल. सो मोटर सेल then be applied in the joints slightly in excess and pressed by a proper tool of the required shape. So if we have to mortar throw on the wall and joints are completely fill up and slightly in excess, जो excess वो वहाँ पे मोटर अप्लाई किया होगा वो हम रिमूव करेंगे. किस तरीके से? उस पे जो टूल प्रॉपर टूल है उसको प्रेस करेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर टूल एंड प्रेस्ड एंड वी हैव टू गेट अ रिक्वायर्ड शेप. ओके, सो नाउ इन second point, in pointing second point, extra mortar if any is removed and surface finished. जो एक्स्ट्रा मोटर है उसको हम रिमूव वहाँ से कर देंगे एंड सरफेस से उसको अच्छा सा फिनिशिंग दे देंगे. मोटर सेल नॉट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ब्रिक्स. जो उस पर मोटर है उसको हम स्प्रेड नहीं होने देंगे सरफेस ऑफ ब्रिक्स में. आफ्टर पॉइंटिंग द सरफेस सेल बी केप्ट वेट फॉर 7 days. So after completion of pointing activity we have to wet pointing and we have to wet surface of the wall for the 7 days के लिए वो जो उसका जो वहाँ पे पॉइंटिंग की जो वॉल सरफेस उसको हम वेट कंडीशन में रखेंगे. ओके, सो इन पॉइंटिंग
two types of pointing generally in the pointing. First one is flush pointing and second one is rule pointing. We discuss about flush pointing. The mortar shall be pressed into the rake, cleaned and wet joints and shall be finished of flush level with edges of brick to give a smooth appearance, and the edges shall be neatly trimmed with a trowel and straight edge. जब फ्लश पॉइंटिंग की बात करें तो उस पे पहले मोटर है उसको हम वहाँ पे रेक से प्रेस्ट करेंगे और जो अच्छे से वो साफ कर डालेंगे, एंड उसका जो जॉइंट्स है उसको हम वेट कंडीशन में रखेंगे, एंड उसका जो लुक है अच्छा सा लुक दे देंगे विथ द स्मूथ अपीयरेंस के लिए, एंड जो उसका जो एज है वो हम नीटली अच्छा रखेंगे विथ द हेल्प ऑफ ट्रिम ट्रैवल एंड स्ट्रेट एज की मदद से। तो इस तरीके से प्लस पॉइंटिंग है वो होता है। सेकंड टाइप है उसका रूल पॉइंटिंग। तो रूल पॉइंटिंग कैसे होगा? सो हॉरिजॉन्टल जॉइंट सेल बी एट फर्स्ट फिल्ड अप विथ मोटर। तो रूल पॉइंटिंग में जो उसका हॉरिजॉन्टल जॉइंट है उसको पहले हम फिलअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड प्रेस टू फॉर्म यू शेप हॉरिजॉन्टल लाइंस। और जो उसका फॉर्म है उसको हम प्रेस करेंगे यू शेप हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ओके, सो द वर्टिकल जॉइंट्स shall then be filled with mortar and so उसका जो वर्टिकल जॉइंट्स है वहां का, ओके, तो उसका जो वर्टिकल जॉइंट्स है वहां पे रूल पॉइंटिंग की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स वो हम फिलअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटर and U-shape horizontal lines we have to press, and the vertical joints shall then be filled with mortar। तो उसका जो vertical joints है वो हम मोटर से फिलअप करेंगे and pressed flush with the edges of bricks। और जो उसका फ्लश है edges of bricks वो फ्लश की मदद से हम प्रेस कर डालेंगे। पॉइंटिंग में लास्ट पॉइंट है मेजरमेंट। सो इन मेजरमेंट वी डिस्कस इन डिटेल पॉइंटिंग shall be measured in square meter। तो जो पॉइंटिंग का यूनिट्स आएगा वो आएगा स्क्वेयर मीटर, एंड स्टेटिंग द टाइप ऑफ पॉइंटिंग मोटर एंड इट्स प्रोपोर्शन। तो उस पर हम किस टाइप्स का पॉइंटिंग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर है वो कैसे किस तरीके से लेते हैं, एंड उसका प्रोपोर्शन है वो कितना रखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग एज फ्लश रूल एटसेट्रा एंड सेल बी टेकन सेपरेटली। रेकिंग ऑफ जॉइंट सेल बी इंक्लूडेड इन द आइटम। जो रेकिंग ऑफ जॉइंट्स है वो हम आइटम है उस पर कंसिडर करेंगे। तो मेजरमेंट की बात की जाए तो पॉइंटिंग है वो हम मेजर करेंगे इन स्क्वायर मीटर। ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू डिस्कस एंड डिटेल डिस्कस अबाउट डिस्टेम्बरिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग, यानी कि वॉल्स एंड सीलिंग में डिस्टेम्बर है वो किस तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मटेरियल्स। द डिस्टेम्बर शैल बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड द कलर शुड बी स्पेसिफाइड। ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी जनरली 12 kg पर 100 मीटर स्क्वायर फॉर फर्स्ट कोट। तो उसका जो पहला कोट आएगा वो 100 मीटर स्क्वायर के लिए वो क्वांटिटी हम रखेंगे 12 kg, एंड 7.5 kg पर 100 मीटर स्क्वायर। तो उसका जो दूसरा कोट आएगा वो 100 मीटर स्क्वायर है उस पर उसकी क्वांटिटी आएगी 7.5 kg। सेल बी मिक्सड एट अ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डेज वर्क। जो उसका डेज वर्क आएगा उसके लिए ये मिक्स है वो करेंगे। फर्स्ट जो डिस्टेम्बरिंग है वो किस तरीके से किया जाएगा, तो वो पहले है उसका जो पेस्ट है उसको हम हॉट वाटर है उसका डिस्टेम्बर पाउडर में मिलाएंगे, एंड उसका जो स्टर्लिंग अच्छे से करेंगे, यानी कि उसका जो मिक्स है वो अच्छी तरीके से कर डालेंगे, एंड जो पेस्ट होगा उसको हम फ्यू मिनट्स के लिए वहाँ पे रखेंगे, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेस्ट है वहाँ पे रखेंगे। और जो पेस्ट है वो थोड़ा सा उसका लेयर है वो पतला सा लेयर बनाएंगे, एंड वाटर थिन क्रीम है वो कंसिस्टेंसी और ऑयल पेंट में वो उसमें डालेंगे, एंड उसको जो अच्छे से मिलाएंगे। और उसके बाद वो जो टाइम है वो हम वहाँ पे जो वॉल्स और सीलिंग में अप्लाई कर डालेंगे। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज प्रिपेरेशन ऑफ सरफेस। सो व्हाट इज द प्रिपेरेशन ऑफ सरफेस फॉर डिस्टेम्बरिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स। So new plaster surface shall be thoroughly brushed free from mortar droppings and other foreign matter and rubbed smooth with sandpaper।
The surface must be perfectly dry before distembering is commenced. In case of new plaster, the surface shall be washed over with a solution of zinc sulfate. 1 kilogram of zinc sulfate in 10 liters of water. In case of old work, all loose pieces, scales, etc. shall be removed by rubbing with sandpaper. The surface shall be repaired with plaster of Paris. तो जो डिस्टेम्बर है उसका जो वॉल्स एंड सीलिंग की बात की जाए तो उसका जो सरफेस है उसको हम रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वेयर रिक्वायर्ड एंड देन वॉल सरफेस सेंट प्रिपेयर्ड एंड वॉश्ड एंड अलाउ टू ड्राई, और जो उसको ड्राई उसमें अलाउ कर डालेंगे। और उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो जो डिस्टेम्बर है, डिस्टेम्बर सेल ऑलवेज बी अप्लाइड इन ड्राई वेदर। तो डिस्टेम्बर है उसका यूज है वो हम ड्राई वेदरिंग कंडीशन में ही करेंगे। द नंबर ऑफ कोट्स सेल बी 2 or 3 एज स्पेसिफाइड। So the generally distembering on walls and ceilings may be have taken to 2 to 3 coats, and distember shall be applied with proper brushes but not with whitewash brushes. So distember है जनरली वो अप्लाइड करेंगे हम प्रॉपर ब्रश उसका इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पे वाइट वॉश का ब्रश है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अप्लाइड एंड इमीडिएटली क्रॉस्ड वर्टिकल। सो पहले हम हॉरिजॉन्टली है वो वहाँ पे उसका लेयर लगा डालेंगे, उसके बाद जो वर्टिकल है वो क्रॉस कर डालेंगे, विच टूगेदर कंस्टिट्यूट वन कोट। सब्सिक्वेंट कोट्स शैल बी अप्लाइड ओनली आफ्टर द प्रीवियस कोट हैज ड्राइड। जो सेकंड कोट है वो हम वहाँ पे अप्लाइड करेंगे, तो पहला कोट है वो ड्राई हो जाने के बाद ही दूसरा कोट है वो वहाँ पे हम लगाएंगे। द फिनिश्ड सरफेस शैल बी इवन एंड यूनिफॉर्म एंड सेल सो नो ब्रश मार्क्स। जो फिनिश सरफेस उसमें लगाएंगे वो अच्छे से इवनली लगाएंगे एज वेल एज यूनिफॉर्मली लगाएंगे, एंड सेल सो नो ब्रश, उस पे जो ब्रश मार्क्स है वो हम नहीं दिखने चाहिए। आफ्टर ईच डेज वर्क द ब्रशेस सेल बी वॉश्ड एंड कीप ड्राई। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डे वर्क्स एंड द यूज ऑफ द ब्रशेस एंड द कंप्लीशन ऑफ डे वर्क द ब्रश सेल बी वॉश्ड प्रॉपरली एंड उसको ड्राई कर लेना चाहिए। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी talk about 4 miscellaneous items. First item in this slide, first topic name is uncoached rubble stone masonry in lime. So in general we discuss about different topics are covered, different points are covered in uncoached rubble stone masonry in lime. First point is materials, second point is mortar, third point is laying, fourth point is in laying. Generally, different types of stones may have to considered in uncoached rubble stone masonry in lime. First stone type is face stone, and second stone type is through stone. After completion of this, and we have to detail discuss about two stone, face stone and through stone. And after curing in detail, discuss about curing in detail. And last point is measurement. So generally materials, which types of materials are used for specification for uncoached rubble stone masonry in lime. Stone shall be taken as a hard, sound and fluidic and weathering and of approved quality. The size of stone shall not be less than 50 cm in any direction. Stone shall be hammer dressed to secure close joints so that the stones when laid will come into close proximity. Stone with round surface small not be used. स्मॉल स्टोन है वो उसमें हम यूज नहीं करेंगे, और जो स्टोन है स्मॉल स्टोन किसको कहेंगे, तो जिसका भाई डायमेंशन में 15 सेंटीमीटर से कम होगा वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सीमेंट एंड सैंड फॉर सीमेंट मोर्टार और लाइम एंड सुर्खी सैंड फॉर लाइम मोर्टार स्मॉल मे बी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो उसमें जो सीमेंट एंड सैंड है फॉर सीमेंट मोर्टार और लाइम एंड सुर्खी है वो लाइम मोर्टार में एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वो हम यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट नेम इज मोर्टार। सो मोर्टार shall be specified may be of cement mortar, and generally may we have to taken proportion of cement mortar is a 1:3 or 1:6, or lime mortar proportion is 1:2 to 1:3. Mortar shall be first dry mixed to have the required proportion, and then mixed with water by adding water slowly and gradually and mixed thoroughly to get a uniform mortar.
of workable consistency. Freshly mixed mortar shall be used and joints shall not be thicker than 2 cm. Face joint shall be thinner. तो उसमें फ्रेशली मिक्स्ड मोटर की बात की जाए तो वहाँ पे जॉइंट्स को अप्लाई करेंगे वो 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए. फेस जॉइंट से वो थिनर है, वो उस टाइप का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो नाउ इन लेइंग, तो वहाँ पे जो स्टोन का यूज कर दो किस तरीके से हम वहाँ पे पुटअप और लेइंग कराएंगे. सो ऑल स्टोन सेल बी थ्रूली वेटेड बिफोर लेइंग एंड द वॉल सेल बी कैरीड अप थ्रूली प्लम. तो प्लम बुक की मदद से वहाँ पे जो वॉल है उसका स्ट्रेटनेस चेक करेंगे. 2 types of stone are used in uncoached double stone masonry. First stone is face stone and second one is a through stone. So face stone shall not be narrower than its height and shall tail back and bond well into the backing. The stones shall be arranged to break joint on the face for at least half the height with those of course above or below. उस तरीके से हम वहाँ पे stones का अरेंजमेंट करेंगे. तो थिकनेस ऑफ जॉइंट सेल नॉट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर. तो उसका जॉइंट्स का जो थिकनेस हम रखेंगे वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे. स्टोन्स सेल बी लेड विथ ब्रॉडर फेस डाउनवर्ड टू गिव गुड बेडिंग. कॉर्नर स्टोन्स ऑफ पियंस शुड बी अ गुड स्टोन एंड ड्रेस्ड टू करेक्ट एंगल एंड लेस एज हेडर्स एंड स्ट्रेचेस. द interstices between stones shall be laid with stone chips and spalls to avoid thick beds of joints and mortar. तो ये बात हमने की फेस स्टोन की. जो उसका फेस स्टोन है वो किस तरीके से उसका जॉइंट रखेंगे और उसका जो क्योंस आएगा बराबर कॉर्नर स्टोन होगा तो किस तरीके से वो रखेंगे वो हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया. और सेकंड टाइप है थ्रू स्टोन्स. थ्रू बॉन्ड स्टोन्स ऑफ वन पीस सेल बी प्रोवाइडेड 1/4 every 0.5 centimeter square meter of face and should extend to the full thickness of the wall. For walls thicker than 75 cm, bond stone may be of 2 pieces placed side by side overlapping at least 15 cm. Breadth of bonds stone shall not be less than 1.5 times the height. Not more than 60 cm height of wall shall be constructed at a time. So in the next point, curing. So the work shall be protected from rain or sun while it is green. At the end of the day's work, the top of walls shall be left flooded. The masonry shall be kept moist on the faces for at least 7 days. तो जो मेसनरी वहाँ पे वर्क किया है वो मोस्ट पेज वाला रखेंगे और जो उसका जो फेस है वो 7 डेज के लिए वहाँ पे हम क्यूरिंग करेंगे. Measurement. The random rubble masonry work shall be taken in cubic meter after measuring length, breadth and thickness to the nearest 1 centimeter. The rate of item include the cost of scaffolding. तो जो random rubble masonry है उसका यूनिट है वो हम लेंगे क्यूबिक मीटर में. And after measuring length, breadth and thickness to the nearest 1 cent, the rate of item include the cost of scaffolding. In next slide we discuss about first class coast double stone masonry. First point is material, second point is mortar, third point is laying, after laying curing and final point is measurement. So in first class coast double stone masonry, first one is materials. So the stone shall be hammered placed on bed and top and also on slide, so that stones shall be come to close proximity and each stone can be laid in course. Okay. The stone shall be, which types of stones are used in the materials? The stone shall be hard, sound and free from decay and weathering and approved quality. The size of stone shall not be less than 50 cm in any direction. Stone with round surface shall not be used. Second point is mortar. So mortar shall be specified, may be of cement mortar and generally proportion may be taken as 1:3 to 1:6. For lime mortar 1:2 to 1:3, mortar shall be first dry mixed to have the required proportion and the mixed with water by adding water slowly and gradually and mixed thoroughly to get uniform mortar of workable consistency. Freshly mixed mortar shall be used and joints shall not be thicker than 2 cm. Face joints shall be thinner. Now third point is laying. So which have to laying. All stones shall be thoroughly weighted before laying. और जो थ्रू स्टोन्स होगा और थ्रू बॉन्ड स्टोन्स होगा वो 1 पीस है वो वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे.
एंड इंटरवल्स नॉट लेस देन 1.5 मीटर है वो ईच कोर्सेज पे वो इस तरीके से अप्लाई. फॉर वॉल्स अप टू 60 सेंटीमीटर थिकनेस a through stone shall extend from one face of the wall to the other. But in case of walls of greater thickness, bond stone may be of two pieces placed side by side overlapping at least 15 centimeter. Next point is curing. In curing, the work shall be protected from rain or sun while it is green. At the end of day's work, the tops of walls shall be left flooded. The masonry shall be kept moist all the faces for at least 7 days. उस पे जो मेसनरी आएगी तो उसकी जो सभी जगह होगी तो वो 7 डेज के लिए हम मोस्ट रखेंगे. मेजरमेंट. सो द रैंडम रबल मेसनरी वर्क शेल बी टेकन इन क्यूबिक मीटर आफ्टर मेजरिंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर. द रेट ऑफ आइटम इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्केफोल्डिंग. तो उसमें जो स्केफोल्डिंग आएगा तो उसका मेजरमेंट वो उसका जो रेट है वो हम कंसिडर करेंगे. ओके. In next slide we have to discuss about ashlar masonry. Okay, so in ashlar masonry different points are considered in the ashlar masonry. Different points are considered in the ashlar masonry. First point is stones, second mortar, third laying, fourth one curing and fifth one measurement. Okay. So in ashlar masonry, stones, if we discuss about stones shall be like a hard types as well as tough, round and durable of approved quality, and must be rest on chisel, and all sides have perfectly square as well as rectangular faces to that they may be laid in perfectly horizontal as well as vertical joints. And minimum height of stone shall be 20 centimeter and breadth not less than 1.5 times the height. Second, mortar. Mortar shall be specified which fine mortar shall be used and may be of cement mortar 1gm2 to 1gm4, or lime mortar may be have taken as 1gm1 to 1gm2. Materials of mortar illustrative example like as a cement or lime and sand shall be of standard specification, as well as mortar shall be first dry mixed to have the required proportion and then water is added slowly and gradually और उसको मिक्स करेंगे थ्रूली फॉर ए यूनिफॉर्म मोटर एज वेल एज वर्केबल कंसिस्टेंसी के लिए. फ्रेशली मिक्स्ड मोटर है वो सेल में हम अच्छे से यूज करेंगे. थर्ड पॉइंट है वो लेइंग है. तो जो स्टोन्स है तो स्टोन्स उसमें जो स्टोन्स आएगा तो वो वेटेड होगा बिफोर लेइंग. ओके. स्टोन सेल बी लेड इन रेगुलर कोर्सेज. उसको जो रेगुलर कोर्स है उस पर हम अप्लाई करेंगे. एंड नॉट लेस देन 40.5 सेंटीमीटर इन हाइट, and all the courses shall be of the same height, and all courses shall be laid truly horizontal, and all vertical joints shall be truly vertical. Face stones shall be laid header and stretcher respectively. No joints shall be thicker than 5 mm. If pointing is not provided a separate item, the joints shall be struck and finished at the time of laying. Not more than 60 centimeter height of masonry shall be unobstructed at a time. Now, fourth point is curing. The work shall be protected from rain or sun while it is green, and at the end of the day's work, the tops of walls shall be left flooded. तो उसका जो ऊपर पोर्शन होगा उसको हम left flooded कर डालेंगे. The masonry shall be kept moist on the all the faces for at least 7 days. जो वहाँ पे मेसनरी वर्क होगा तो उसको हम 7 डेज के लिए वेटिंग कंडीशन में रखेंगे. आफ्टर क्यूरिंग, next and last point is measurement. So the random rubble masonry work shall be taken in cubic meter, and after measuring length, breadth and thickness to the nearest 1 centimeter for the ashlar masonry, and the rate of item include the cost of scaffolding. तो जो rate of item आएगा उसमें हम cost of scaffolding है उसको हम add करेंगे. Okay. So now in next slide we have to discuss about अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट फॉर इरिगेशन कैनाल एंड रोड. जो इरिगेशन कैनाल है वो रोड है उसमें अर्थवर्क एम्बैंकमेंट वो हम किस तरीके से करेंगे. तो इसमें डिफरेंट 5 points are covered. First point is clearing land width, second one is setting of alignment, third is borrow pits, fourth one is embankment or cutting, and last one is measurement and land rate.
So first point is clearing land width. So center line of channel or road or bank and its edges shall be marked correctly and neatly on the ground. Outlines of borrow pits shall also be marked on the ground. Masonry formation pillars shall be constructed at suitable points as directed by the engineer in charge to serve as benchmarks. So the whole area under cutting or filling shall be cleaned of all vegetation, shrubs, jungles, rubbish and other materials, roots of trees, if any, shall be removed to depth of 60 cm below ground. ओके, सो उसमें जो वॉल एरिया वो कटिंग और फिलिंग होगा तो उसमें अच्छे से क्लीन कर डालेंगे. तो उसमें वहाँ पे जो अनऑब्स्ट्रक्टेड मटेरियल्स कटिंग फिलिंग के लिए कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्टेड मटेरियल हो गए, लाइक वेजिटेशन हो गया, वहाँ पे श्रब हो गया, जंगल्स हो गया, रबीस हो गया, एज वेल एज अदर मटेरियल से वो वहाँ पे आएगा. सेकंड पॉइंट इज सेटिंग ऑफ अलाइनमेंट. On setting of alignments for banking the as well as the existing surface shall be plowed to a depth of 15 cm to make bond with new earth. Okay, and profiles shall be made 30 to 100 meter apart and extra profiles may be made around a curve or where there is change in direction or gradient. For banking settlement, allowance shall be made and profiles shall show the total height including allowance for settlement and a settlement allowance of 10% in case of hand rammed consolidated fields and 5% in case of heavy machinery consolidated fields shall be made. तो जो उससे सेटिंग ऑफ अलाइनमेंट की बात की तो हमने यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में 10% एज वेल एज 5% में बी टेकन ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ अलाइनमेंट. थर्ड पॉइंट है वो है बोरो पिट्स. So in borrow pits, sole coat fillings shall be obtained from the borrow pits marked on each side of the alignment, as well as depth of borrow pits should not be more than 30 cm and spoil banks when required should be of regular and uniform height with prescribed slope. फोर्थ पॉइंट है वहाँ पे एम्बैंकमेंट और कटिंग. ओके, सो इन एम्बैंकमेंट और कटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे जो क्लोट्स है अर्थ में तो वो ब्रोकन बोरो एट ओल्ड रूट्स है वो स्टोन्स वो वहाँ से हम रिमूव कर डालेंगे. एज वेल एज अर्थवर्क शेल बी डन फ्रॉम एज टू द सेंटर लाइन. द थिकनेस ऑफ लूज लेयर शेल नॉट बी मोर देन 25 cm. Surface and slide slope shall be dressed and finished neatly. In cutting, first the central rectangular proportion shall be excavated from top to bottom and then the slide with slide slopes 1 gem 5 gem 1 to 1 gem 1 depending on the nature of soil है वो किस तरीके का होगा उस तरीके से वहाँ पे एम्बैंकमेंट और को कटिंग करेंगे. लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मेजरमेंट एंड रेट. सो प्रोफाइल और फिल मेजरमेंट allowing settlement allowance or borrow pit measurement shall be taken as per specifications and rate shall include normal lead of 30 meter and lift of 1.5 meter. So प्रोफाइल और फिल मेजरमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे सेटलमेंट अलाउंस एज वेल एज बोरो पिट का जो मेजरमेंट है वो हम अच्छे से स्पेसिफाइड करेंगे एंड रेट वो वहाँ पे है उसका नॉर्मल लीड है वो 30 मीटर एंड लिफ्ट वो 1.5 मीटर है वो रखेंगे. सो ओके, इन दिस वीडियो से तो ये वीडियो सेशन में हमने यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है वो डिस्कस किए. पहला पॉइंट था पॉइंटिंग, उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन देखा. उसके बाद डिस्टेम्बरिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स का और मिसलेनियस आइटम की बात की जाए तो वहाँ पे अनकोस्ट डबल स्टोन मेसनरी देखा. उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट क्लास कोस्ट डबल स्टोन मेसनरी, थर्ड है वो एस्लर मेसनरी एंड फोर्थ वन इज अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट फॉर इरिगेशन कैनाल and road. Okay, so in this video session we have to generally 6 topics are covered during the entire video session. Okay, so if any query related this video session you can also contact me on my personal contact number 8866 302551. Okay, thank you.